अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब जो हमारा टॉपिक है इट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। ये दोनों टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। यू विल फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने पिछले टॉपिक में भी निकाला, जो कि वहां पर मकसद नहीं था। यहाँ पर डायरेक्टली हम निकालेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और हम दूसरा जो चीज निकालेंगे यहाँ पे दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। इसके लिए हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जो आपकी ये ब्लू कलर्ड है। इट रिप्रेजेंट्स योर रिजिड बॉडी। इट इज रोटेटिंग अबाउट z एक्सिस। ये आपका z एक्सिस ऊपर की तरफ है, हॉरिजॉन्टली आपका x और y एक्सिस है। सो इट इज रोटेटिंग अराउंड z एक्सिस इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। z एक्सिस इज वर्टिकल। तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं ऑफ masses m1 m2 up to mn, and those particles are at distances rho1 rho2 rho3 and so on from the axis of rotation, and those particles have velocities v1 v2 and v3 and so on. So we know the masses of different particles, we know their speeds, we can find the kinetic energy of all the particles of their medium, and that will give us the kinetic energy of their rigid body. So we have a rigid body rotating about z axis in a horizontal plane. It is made up of particles m1 m2 m3 so on, and they are at distances rho1 rho2 rho3 and so on, and these particles are knowing velocities v1 v2 and v3 and so on. Therefore kinetic energy of the rigid body is K is equal to, so 1/2 m1 v1 square plus 1/2 m2 v2 square plus 1/2 m3 v3 square plus so on. Kinetic energy of each particle we have added, and we have got the total kinetic energy. Now we know v is equal to और ओमेगा जो हमारे एक्सप्रेशन है तो हर किसी पार्टिकल पर अप्लाई होगा. सो v1 would be rho1, radius is rho1 and omega is same for all, and v2 and so on. So we can write 1/2 m1, v1 is rho1 omega, इसका स्क्वायर होगा rho1 स्क्वायर omega स्क्वायर. Similarly 1/2 m2 rho2 square omega square. Omega is omega for all. Don't do omega 1, omega 2, omega 3 plus 1/2 m3. फिर v3 would be rho3 square omega square plus 1. So इसमें we have a common omega and 1/2. So we can write 1/2 m1 rho1 square plus m2 rho2 square plus m3 rho3 square plus so on, and बाहर लिखेंगे common omega square which is with each term. So now this is summation. We can represent this in summation form, and we can write 1/2 summation mj rho j square summing over j and omega square. Now this term, sum of product of masses and square of distances, square of their respective distances from the axis of rotation, is called as moment of inertia. So we can write kinetic energy of a rotating rigid body is 1/2 I omega square. So you find an expression of kinetic energy of a rigid body. जिसमें आपको मालूम होना चाहिए where I is equal to summation of mg rho g square summing over all g's. So this term is called as moment of inertia of the body. Now this is a constant for a given axis. So moment of inertia can be defined as sum of product of mass and square of distance of all particles of the body from the given axis of rotation. Now we know this rho lies in xy plane, so it will have x component and y component. Then we can write this also is, so we can write
This also is summation of G mg. For rho j, we can write xg square plus yj square. If it were only rho, then it would be root of this thing, but it is rho j square, so this would be xj square plus yj square. This is moment of inertia. Well, now these are the x component of distances from axis of rotation. Like this is the distance, x component of distance, this is the y component of distance rho j. Now this is here, इसमें हमने क्या किया था कि हमने सोचा था कि body, rigid body is made up of individual particles of masses m1, m2 and so on. But if the body is continuous, then we can divide this body into small mass elements. Say this is one of those mass elements. Its mass is dm and its distance is rho. Now rho is a variable. तो हम लिखेंगे for a continuous distribution of mass. तो यहां पर हमने क्या माना था? We had assumed discrete mass are here. The particles have separate identity. ठीक है? m1, m2 अलग. अब हम मानते हैं कि इकट्ठे हैं, कुछ अलग फर्क नहीं, जैसा पानी कंटिन्यूअस दिख रहा है, इस तरह यहां मानेंगे पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं कि उनके दरमियान स्पेस ही नहीं है. तो उस केस में हम इस बॉडी को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे. उन्हीं में से एक एलिमेंट है जिसका मास dm है. तो इस केस में आपका एक्सप्रेशन बनेगा फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास आई वुड बी, नाउ समेशन वुड गो टू इंटीग्रेशन and this rho j would become simply rho square and these mass element is dm, so it will be integral of rho square dm. Now rho is a distance, rho square dm. और फिर अगर हम dm rho के कंपोनेंट्स माने तो हम लिख सकते हैं दूसरा इसका इंटीग्रल ऑफ x square plus y square dm. So ये हमारा है expression of kinetic energy for a rigid body which is rotating. जब rigid body rotate करती है तो इसकी kinetic energy इतनी होती है. तो kinetic energy किस पर डिपेंड करती है? ये mass पर डिपेंड नहीं करती है डायरेक्टली, डिपेंड करती है मगर डायरेक्टली नहीं, थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया. जितना मास होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा, मगर उसके साथ साथ वो एक्सिस पर भी डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे कि मैंने पहले कहा. सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द एंगुलर वेलोसिटी. Greater the moment of inertia, greater the angular speed, the greater will be the kinetic energy. And then also we found the expression of moment of inertia of a rigid body in this way. अब हम finally देंगे what is the physical significance of moment of inertia. So we have physical significance of moment of inertia. Moment of inertia का rotational motion में वही रोल है जो लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन में मास का रोल है. So लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन, यहां मास है आपका, यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. मास हमें क्या बताता है? मास ये बताता है कि बॉडी में इनर्शिया कितना है. वो हम क्या बोलते हैं? मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया. यह हमें ये बताता है कि अगर बॉडी रुकी हुई है तो उसको एक्सेलरेट करना या चलाना कितना आसान है या कितना डिफिकल्ट है. अगर m कम होगा तो बॉडी का इनर्शिया भी कम होता है. उसको अगर वो रुका हुआ है उसको चलाना आसान होता है, और अगर बॉडी चलती है, मूव करती है विद सम वेलोसिटी, उसको रोकना भी आसान होता है. दूसरे लफ्जों में मास में ये बताता है कि बॉडी को एक्सेलरेट करना कितना डिफिकल्ट है. इफ द मास इज स्मॉल इट इज इजियर टू एक्सेलरेट अ बॉडी, इफ द मास इज लार्ज इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेलरेट. इसी तरह जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इट इज अ मेजर ऑफ rotational inertia of a rigid body.
ये मैं बता है बॉडी में रोटेशनल इनर्शिया कितना है. सो यू हैव अ डोर हियर, ये एक डोर है, ये इसके हिंजेस है यहाँ पे, इन हिंजेस के इर्द गिर्द ये घूमता है. नाउ इफ दिस अ लाइट डोर इट इज इजी टू रोटेट इट, क्योंकि इसका रोटेशनल इनर्शिया कम है. बंद है दरवाजा, हम इसको खोलना चाहते हैं. इफ इट इज लाइट डोर इट विल हैव उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, वो लाइट ही नहीं करेंगे मास में, उसमें एक्सिस का रोल है. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम है तो इसको रोटेट करना आसान है. और अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, जैसे पुरानी बिल्डिंग्स जो हमारी पुरानी जो हमारे मॉस्क्स हैं, टेम्पल्स हैं, बड़े बड़े डोर्स हैं वहां पे, उनको रोटेट करना डिफिकल्ट है बिकॉज उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है. इसी तरह अगर आपका कोई चीज घूम रहा है, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसे आराम से आप रुका सकते हैं. बट अगर कोई बड़ा व्हील है या फास्ट घूम रहा है, ओमेगा बहुत ज्यादा है, उसको रोकना मुश्किल होगा क्योंकि इसका रोटेशनल इनर्शिया ज्यादा होगा. सो रोटेशनल मोशन में आई का रोल ये है कि ये बताता है बॉडी में कितनी टेंडेंसी है अपोज करने की. अगर हम उसका रेस्ट में है, इसको हम मोशन में लाना चाहते हैं, एक्सीलरेट करना चाहते हैं, तो बॉडी में कितनी टेंडेंसी है उसको अपोज करने की, ये हमें बताता है रोटेशनल इनर्शिया. इस तरह बॉडी रोटेट कर रही है ऑलरेडी, उसको रोटेशन को कम करना है, उसको रोकना, उसमें कितनी टेंडेंसी अपोज करने की, वो उसके रोटेशनल इनर्शिया पर डिपेंड करेगा. ज्यादा रोटेशनल इनर्शिया होगा, ज्यादा डिफिकल्ट होगा उसको चेंज करना, इसको बॉडी को रोकना. So with this I end today's topic. I hope you got it. Thank you very much.